सबको याद होगा जैसे मैं बात कर रहा था आप लोगों से, तो कैलकुलेशंस के बारे में वो बोल रहे थे, और जैसे मैंने कहा एज एन एनालिस्ट यू मे यूज दीज पैरामीटर्स व्हाइल वर्किंग, बट फंडामेंटली ड्यूरिंग द इंटरव्यू अगर आप इन चीजों को बोल सकते हो कि आपको वैक कैलकुलेट करना आता है इंडस्ट्री लेवल पे, तो वो एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट करता है। एंड दैट्स व्हाई हमने डिसाइड किया पिछली बार कि हम उस सेशन को आगे फॉरवर्ड करेंगे। एंड आज सौरभ सर आपको वैक को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो वाला पॉइंट कवर अप करेंगे। आपको कुछ एक्सेल शीट में वो चीज प्रोवाइड करेंगे, सोनिया मैम को वो प्रोवाइड करेंगे, एंड सोनिया मैम विल सेंड इट अक्रॉस टू ऑल यू पीपल so that you can use that Excel file for knowing what kind of links and everything, okay, which is required to get those kind of values of indices and everything. And agar time bachta hai, then Saurabh sir has mentioned couple of points you would like to take, which is useful in business valuation. Right, Saurabh? If I have kind of paraphrased correctly. Yes, Rohit. So what I had in mind is to look at the peer comparables and transition comparables, because those are the things which help us to derive the WACC as well. Because WACC जो हम calculate करेंगे, then हमें जो betas and debt equity रहते हैं industry level पे, we use the median or average of the peers. So that is ये जो point था वो last time रहेगा, because last time I was giving an overview कि क्या क्या parameters हैं. So आज थोड़ा सा उनका definition and थोड़ा सा calculation जो मैंने अभी कर है वो बताऊंगा। एंड देन उसके बाद ट्रेडिंग कॉम्स एंड ट्रांजेक्शन कॉम्स बहुत ही इजी वे में आई लेट यू नो। तो उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे देन विल टेक अप द क्वेश्चंस फॉर फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। ठीक है। So Sonia, today I may not be available for the entire session because I am already in a meeting right now. Sonia ma'am will be moderating the session. सोनिया मैम ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये लिंक कब तक अवेलेबल है, उसके 10 मिनट पहले आपको सौरभ सर एंड पार्टिसिपेंट्स को बोलना पड़ेगा कि 10 मिनट्स लेफ्ट, right, so that everybody is on sync with the program. So participants and all the students, is it good to go? Can I get a quick yes on the chat box quickly? Can I get a quick yes on the chat box, all of you? All right. सब लोग, हाँ जी. All right, over to you, Saurabh, and all the best to all the participants. Learn as much as possible, and जितना absorb कर सकते हो करो, because काफी सारी चीजें शायद आपको पता नहीं होगी, but जितना absorb कर सकते हो करो, that would be useful. All the best, Saurabh. Sure, thank you, Rohit. Yeah, sure. So very good afternoon to everyone. So last time, if you remember, we covered till cost of equity, right? But I discussed all the parameters involved in the WACC. So I'll take forward from there. Let me present my screen. So let me know once it's visible. Can you see my screen? Yes. Okay, great. So guys, लास्ट सेशन में मैंने आपको ये सारे पैरामीटर्स बताए थे, एंड इफेक्टिवली दीज आर हैव रिमेन्ड सेम. सो बट कुछ लिंकिंग्स, जैसे आपको मैं कल लास्ट सेशन में बता रहा था कि ये रिस्क फ्री रेट है, हमें कहाँ से लेने हैं, क्या चीज़ करना है. सो आई हैव प्रिपेयर्ड काइंड ऑफ अ डमी शीट फॉर यू, एंड वो हम ये आज यूज करेंगे. ठीक है. सो अगेन फॉर एग्जाम्पल जो बेसिक है, वी ऑलरेडी नो, वी आर क्लियर विद दी बेसिक्स. दिस इज generally at industrial we get from the cap IQ. When you join the firm, तो वहाँ पे company specific tools होंगे which will you will help which you'll be using to derive. तो आपको इतना research करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, but ये just to give you a reference कि cap IQ से हम कहाँ से source करते हैं, तो मैंने उसके लिए ये Excel prepare किया है. So if you look at, तो मैंने 30-year government bond का use किया है, which is coming out to be 2.28%. ये latest value है, which is available on the I think 6th of April. तो दिस इज द लेटेस्ट व्हिच इज 30-year गवर्नमेंट बॉन्ड, राइट. यहाँ पे आप ये यील्ड कर्व का रेट देख रहे हो, ग्राफ देख रहे होंगे कि ये किस तरीके से फ्लो हो रहा है. एंड और इफ आई जूम माय स्क्रीन, तो इधर और भी रेट्स अवेलेबल हैं, जैसे जर्मनी गवर्नमेंट रेट 1 year 2 year 10 year 20 year 30 years. तो जनरली जब हम टर्मिनल वैल्यू का कैलकुलेट करते हैं, तो वी आर यूजिंग 30-year का रेट. Otherwise specified, you can use 20 year or 15 year or maybe 10 year, whichever as per the request, right? So I'll give you a walkthrough कि ये आपको कहाँ से, अगर S&P में कभी आपको मौका मिलता है तो ये आपको कहाँ से सोर्स करना है, कहाँ पे जाना है, और कहाँ से आप देख सकते हो ये, right? CRP हमने डिस्कस किया था, which is coming from the Damodaran, right? It is the same. Inflation again from the Oxford Economics or from the IMF website. ये हमें पता है. मार्केट रिस्क प्रीमियम फ्रॉम एम्पिरिकल स्टडीज,
एंड जब बात आती है अनलिमिटेड बीटा की, so this again, if you have if you'll join the firm, you'll have your own tools where you can get the betas and everything. But इसमें हम अनलिमिटेड बीटा इंडस्ट्रियल बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं मीडियन और एवरेज ऑफ योर पीयर्स, राइट? सो देयर आर मल्टीपल मेथड्स. फॉर एग्जांपल जो बेस्ट नोन तो यही होता है कि हम पीयर्स का लेके करेंगे. तो बेसिकली रिग्रेशन रन होता है जो भी, और ये सारा रन होता है S&P कैप IQ से. वी हैव प्लगइन्स, वी हैव टूल्स, जो भी टूल होगा वो कैप IQ से सारा प्लग इन करके आपको होगा. तो बहुत सिंपल सा आपको एक जल्दी से ब्रीफ दे देता हूँ. इसमें रेग्रेशन कैसे वर्क करता है कि ये आपको एडजस्ट क्लोज प्राइस अवेलेबल हो जाते हैं, एंड दिस कैन बी फाउंड ऑन लाइक फ्रीली इफ यू गो याहू फाइनेंस. अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट का देखना है तो माइक्रोसॉफ्ट का आप याहू फाइनेंस पे जाइए, लिखिए याहू फाइनेंस historical data, stock price, and you'll get all the historical stock price. Then you'll calculate the returns, daily returns लिया है यहाँ पे मैंने, which is your ending minus beginning minus 1. Similarly फिर हम benchmark होता है, जैसे आपका S&P हो गया, Nasdaq हो गया, other like benchmark NSE, BSE, उनके adjusted close price. बेसिकली ये adjusted close price होता है आपका dividend adjusted, राइट? तो अगर डिविडेंड का इम्पैक्ट हम यहाँ से एक्सक्लूड कर देते हैं, बिकॉज डिविडेंड एक्चुअली इम्पैक्ट्स, डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो गया तो वो सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं आपके शेयर प्राइस पे. दिस इज आई एम टेलिंग अबाउट फॉर इंडिविजुअल स्टॉक प्राइस. इसका तो इंडेक्स का विल रिमेन द सेम. सिमिलरली यू विल कैलकुलेट द रिटर्न्स, एंड जो बीटा हम निकालेंगे, सो दे आर टू वेज, इधर यूज स्लोप और कोवेरियंस. कोवेरियंस इज नॉट जनरली यूज, ये बस आप थ्योरेटिकली आप you can just kind of remember कि how many ways एक कोवेरियंस एक वे होता है निकालने का. तो स्लोप होता है बेसिकली, again if I'll go into detail the line of best fit and all that, वो थोड़ा सेशन हो जाएगा. So you can just remember आप कि this is how you calculate, this is how the back calculation happens in the tool. ठीक है, स्लोप ले लेते हैं your company का रिटर्न and your benchmark returns का, right? And these are the peers data wherein फॉर एग्जाम्पल दिस इज डन फॉर कंपनी ए, जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैंने बेसिकली लिंक किया हुआ यहाँ से सी. सिमिलरली कंपनी बी, सी एंड डी का सिमिलरली ऐसे ही आपका कैलकुलेशन होता है. आपका बीटा निकल जाएगा, वो यहाँ पे सारे बीटास आपके आ जाएंगे, लीवर बीटास, ठीक है. एंड ये सारा डेटा प्रोवाइड को अगेन इधर यू कैन S&P कैप IQ से मिल जाता है, अदरवाइज डेट टू इक्विटी रिपोर्ट्स में भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में भी अवेलेबल होता है. And then you'll calculate the unlevered beta, which is nothing but your your levered beta divided by 1 plus 1 minus your tax rate into your debt to equity, right? So इस example में मैंने बहुत simple सा किया है. Debt is your 100, equities are 500, similarly for the others, and then you divide by D2E. Tax rate again I have used from this is basically the statutory tax rate. तो ऐसे हमारा betas आ जाएंगे, and then you will take the average or the median, ठीक है, and then you will be linking this unlevered beta यहाँ पर. This is 0.54. This is how we are generally do in our day-to-day calculations. Okay, similarly for the debt to equity का भी हम या तो average लेते हैं या तो median लेते हैं, ठीक है, like this I have shown here. This file I will share with you guys so that you can have as a reference point. So levered beta हम उसको re-lever करेंगे, because this is an unlevered beta, and then you have to take the कि हमारा डेट का जो कंपोनेंट है किस तरीके से हमारा वर्क कर रहा है. अगेन वी हैव द फॉर्मूला ऑफ levered beta equals to unlevered into 1 minus your 1 plus 1 minus tax rate into debt to equity. बेसिकली ये कुछ नहीं है. बेसिकली अगर आपको अनलीवर्ड बीटा निकालना आता है तो इज जस्ट दी यूनिटरी मेथड. आप लीवर्ड को नीचे कर दोगे, अनलीवर्ड आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, as simple as that. तो अगर आपको एक फॉर्मूला पता है, आपको दूसरा फॉर्मूला ऑलरेडी आप निकाल लोगे. इट इज नथिंग बट योर यूनिटरी मेथड ओनली, ठीक है. साइज प्रीमियम ये जनरली आपको डफिन फिलिप्स फर्म है वो पब्लिश करती है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था. देन यू हैव कॉस्ट ऑफ इक्विटी विच इज नथिंग बट योर कैपम. आप आते हैं कॉस्ट ऑफ डेट पर, राइट. सो दिस इज द रिस्क फ्री रेट जो हमने डिस्कस किया, विल बी रिमेन द सेम. स्प्रेड आई विल नो. सो ये तो आपको पता ही है, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड का कहाँ से आ रहा है. सिमिलरली वी हैव कॉर्पोरेट बॉन्ड रेट्स. तो कॉर्पोरेट के भी डिफरेंट तरीके के रेट्स होते हैं.
सो इस एग्जाम्पल में मैंने सारे कॉर्पोरेट्स कंसिडर किया है. All corporates means it covers your each and every industry, whether it's your healthcare, whether it's your industrial, whether it's your oil and gas. And if you go on S&P Cap IQ, अलग अलग इंडस्ट्री का विद रिस्पेक्ट टू द रेटिंग्स आपको मिल सकता है वहाँ पे. जैसे अगर हम ऑल कॉर्पोरेट्स की बात करें, यहाँ पे आपको ट्रिपल रेटिंग का 30 दिख रहा है, सिम में आपको डबल ए का दिख रहा है, यहाँ पर ए रेटिंग का दिख रहा है. सो दे आर मल्टीपल रेटिंग्स फॉर दिस ऑल कॉर्पोरेट बॉन्ड रेट. तो उसका हमारा आता है 2.96. स्प्रेड आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने किया था, आई मीन बताया था लास्ट टाइम. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट. हमारा 0.6 आ जाता है. ठीक है, विच इज नथिंग बट योर कॉर्पोरेट बॉन्ड का रेट सब्ट्रैक्ट माइनस करेंगे हम उसमें से आपका जो गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी रेट है, यानी कि इस केस में जर्मनी का 30 ईयर बॉन्ड रेट. राइट. इसके बाद आती है हमारी प्री टैक्स की कॉस्ट ऑफ डेट, विच इज नथिंग बट योर समेशन ऑफ योर रजिस्टर्ड रेट RF and your credit spread. ठीक है, टैक्स रेट 26%, दिस इज अगेंस्ट स्टैट्यूटरी टैक्स रेट. सो आप किसी भी अगर कंट्री का बना रहे हैं या मतलब किसी फर्म का बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो यूएस लिस्टेड फर्म है और यूएस में उसकी ऑपरेशन है, तो आप यूएस का टैक्स रेट यूज करेंगे. अगर वो मल्टीपल कंट्रीज में है, देन यू विल टेक दी समटाइम्स हम वेटेड वाक बनाते हैं रेवेन्यू स्प्लिट के बेसिस पे. तो रेवेन्यू के बेसिस जो रेवेन्यू स्प्लिट होता है कि कितनी कितनी कंट्री से कितना परसेंटेज आ रहा है, उसके बेसिस पे हम टैक्स रेट, हम वेटेड टैक्स रेट कैलकुलेट कर लेते हैं और देन वी विल लिंक इट हियर. तो कॉस्ट ऑफ डेट इज नथिंग बट योर प्री टैक्स रेट कॉस्ट ऑफ डेट इनटू लाइक 1 minus t. So this is equity ratio, your nothing but your 1 divided by debt to equity. I mean 1 divided by 1 plus debt to equity. And जो debt ratio निकालने के लिए we can just simply subtract the 1 out of it. तो इस केस में जो मुझे एक जहाँ याद था कल, आई थिंक लास्ट सेशन में आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी थे. तो एक उसमें से एक क्वेश्चन था कि हम वैक को एज इन्वेस्टमेंट थीसिस कैसे यूज कर सकते हैं. राइट. सो देखिए, वैक हमारा बेसिकली क्या होता है, वैक इज योर काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब वो कैसे, क्योंकि योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि आप कहीं यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं. आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आप इक्विटी में इन्वेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि आपको हाई रिटर्न चाहिए, और वो पैसा अगर आपको रिटर्न नहीं दे रहा है तो आप कहीं और पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. मान लो अगर गवर्नमेंट बॉन्ड ज्यादा दे रहा है, जो बहुत ही रेयर होता है. ठीक है, तो इट इज, तो वैक इज योर काइंड ऑफ अ कॉस्ट ऑफ इट्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फ्रॉम अ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव. राइट. सो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वैक का जो है, आपकी कंपनी का वैक कितना आ रहा है, प्लस एक होता है रेंज. वैक हम रेंज निकालते हैं, जैसे हम पीयर्स का वैक निकालते हैं. जैसे हमने यहाँ पे देखा कि पीटा का पीयर्स बीटा कितना आ रहा है, तो आपका वैक अगर पीयर के रेंज में आ रहा है देन इट इज फाइन. अदरवाइज अगर वो उससे ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स कंपनी ने ज्यादा पैसे पे ज्यादा रेट पे पैसा उठाया है, तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है. क्यों? क्योंकि इसमें कॉस्ट ऑफ डेट भी आ रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी है, और आप जनरली देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ डेट थोड़ा सस्ता होता है लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज वेरी वेरी हाई. तो उस केस में डिपेंड कर जाता है कि आपको ये देखना है कि अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी बहुत ज्यादा है तो क्यों है, क्या उसका डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा है, उस केस में क्या वो ज्यादा हाईली लेवरेज फर्म है. तो ये थोड़े पैरामीटर्स आपको जज करने पड़ते हैं अगर आपको ऐसा वाको एज इन्वेस्टमेंट थीसिस यूज करना है, कि ताकि अगर मतलब बेसिकली ये देखा जाए तो ये 6.84% पे पैसा उठा रही है मार्केट से, अगर हम बात करते हैं तो आम भाषा में. अगर आपका पीयर का रेंज आ रहा है मान लो बिटवीन 7 to 8%, तो देन इट इज फाइन. ठीक है. अगर ये रेट अगर था आपका 9.75 या 10%, दैट मीन्स थोड़ा गड़बड़ है. So you should, I mean, kind of do further due diligence उस कंपनी में, कि आपको मतलब थोड़ा सा you have to be like have a detective mind कि ये ऐसा क्यों हो रहा है. Right. So again एक important point है from the investment thesis कि when your return of equity, this is return of equity basically, is greater than your cost of equity, this is what you call economic value added, which is nothing but your every कंपनी का एक होता है कि you have to maximize your shareholder returns, right? तभी कंपनी में आप पैसा लगाते हो, किसी कंपनी का आप हिस्सा लेते हो, क्यों? क्योंकि आपको शेयर होल्डर रिटर्न मिलता है. सो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा है, then you can say that yeah, you are in a like kind of a safe situation. Similarly, ROCE, return on capital employed, is higher than your WACC, then again you have economic value
addition or kind of maximizing your shareholder return. So अब कोई इसमें से बता सकता है कि ROE और ROEC में हम कॉस्ट का क्यों वो मतलब डिस्काउंटेड क्यों हम डिफर कर रहे हैं? ROE में हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूज किया, ROEC में हमने WACC यूज किया. कैन एनीबॉडी टेल मी कि ये ROE में ही कि WACC हमने क्यों नहीं लिया है? रिटर्न ऑन इक्विटी में हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्यों लिया है, WACC क्यों नहीं लिया? कैन समबडी टेल मी? चैट में लिख दो, या अगर आपको अनम्यूट करना है आप अनम्यूट भी करके वो मुझे बता सकते हैं. स्टूडेंट बताइए, सर ने कुछ पूछा है. रिपीट वंस अगेन सर एक बार और बोलिएगा. या सो मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट इज योर EVA. EVA is generated when your return on equity is greater than your cost of equity or when your return on capital employed is greater than your WACC. Right. So why have I not taken the WACC in the return on equity? I mean, why is it ROE is greater than cost of equity, and why not it is ROE equity is greater than WACC? Then only EVA is considered. Because so when we consider return on equity, we are clearly focusing on. Sanskar, kindly put it in chat box only. Don't Sure. unmute yourself. Okay. Put it in chat box. Oh, just a second, guys. Sanskar, what happened? Hello. Yes, hello. Yeah. So who was the guy who was speaking? Who was answering my question? Can you? I've sent my answer in chat box. Okay. Okay. ROE takes into consideration the cost of equity, whereas ROE takes both debt and equity. This is why we should do the WACC while discussing EV and ROE. Yes, very correct. That is the right answer. Because ROECE is you have both debt and equity, and WACC is the discount rate wherein you use to discount your free cash flow to firm, and free cash flow to firm means all the money available to all the stakeholders of the firm. And cost of equity is solely used as a discount rate for your free cash flow to equity. And why equity? Because obviously denominator and numerator same hona padta hai, obviously, to have an apple to apples comparison, right? So this is the like the correct answer. So any question you have abhi tak yahan par? I think I saw one question ki can you explain the credit spread in detail, so I'll come to that. But इसके अलावा भी कोई और आपका बेसिक क्वेश्चन है कि हमें कैलकुलेशन WACC की कैसे करनी है, पैरामीटर में कोई कंफ्यूजन है, सोर्सेज में कहीं कंफ्यूजन है आपको? सर बैक में तो हम लोग तीन ही चीज ना कंसीडर करते हैं. कॉस्ट ऑफ डेट. सर बैक में तो तीन ही चीज कंसीडर करते हैं ना, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर. हाँ जी, यस यस. सी प्रेफरेंस शेयर इज योर हाइब्रिड सिक्योरिटी बेसिकली, बिकॉज उसमें क्या है आपको आई मीन इट्स नाइदर अ फुल डेट और नॉर अ फुल इक्विटी. सो इट्स अ हाइब्रिड वन. इट इज लाइक प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है कि पहले तो आपको जो डेट है उनका फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है कि फॉर एग्जांपल इफ अ कंपनी इज गोइंग बैंकरप्ट, फुल लिक्विडेट हो रही है, राइट. सो सबसे पहला पैसा मिलता है आपके डेट जो डेट होल्डर्स होते हैं, राइट. दोज गेट द फर्स्ट प्रेफरेंस. सेकेंड इन लाइन इज फॉलोड बाय द प्रेफरेंस शेयर. क्यों? क्योंकि एक तो आई मीन दे उस जो भी उनको प्रेफरेंस शेयर देते हैं उस पर एक फिक्स रिटर्न मिल रहा होता है. सो डेट के कंपोनेंट क्या होते हैं? इट यू हैव अपने डेट लिया, आपको एक फिक्स पेमेंट आ रहा है, चाहे वो एनुअली आ रहा है या वो सेमी एनुअली आ रहा है, राइट. सेम इज योर प्रेफरेंस शेयर इक्विटी. बट प्रेफरेंस शेयर में आपको सेमी एनुअल रिटर्न आ रहा है या एनुअल रिटर्न आ रहा है, प्लस आपको इक्विटी का एक वो कंपोनेंट भी मिल रहा है उसमें, राइट. सो वो एक हाइब्रिड सिक्योरिटी है. सो उसके बाद ही फिर हम देन व्हेन द डेट का पेमेंट होता है उसके बाद देन प्रेफरेंस इक्विटी का पेमेंट होता है. एंड देन जो पैसा एंड में लिक्विडेशन होने के बाद आई मीन जब दोनों को पैसा सब कुछ बच जाता है
तो सारा जाता है इक्विटी होल्डर्स को। सो बैक के 3 कंपोनेंट्स है। सर योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी का देखो कैपएम तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, कैपिटल कैप एसेट प्राइसिंग मॉडल। वो तो सर उसमें तो सर ये CAPM मॉडल ना। हाँ जी CAPM मॉडल। तो सर CAPM मॉडल और CAPM मॉडल से भी निकलता है सर। एक होता है ना कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल हम लोग लेते हैं, जिसमें ये डिविडेंड नेक्स्ट ईयर निकलता है कि मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला। सी DDM जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल कह रहे हैं ना, वो बेसिकली आपका एक फ्री कैश फ्लो फर्म की वो कैलकुलेशन हो रही है। उसमें आप डिस्काउंट रेट भी यूज करते हैं उसके अंदर आप। डिस्काउंट रेट यूज करते हैं सर, वो तो ठीक है, बट सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो उसी से कैलकुलेट होता है। K इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस सर, प्राइस पर शेयर प्लस ग्रोथ रेट। See, I don't know about that one, but as per my understanding, there's only like one thing how we CAPM में तो हम लोग बीटा को ना कंसीडर करते हैं। हाँ राइट, बीटा को we have to consider because of the riskiness of the stock of the company। बीटा और ये रिस्क फ्री रेट और रिस्क मार्केट, रिस्क प्रीमियम। हाँ जी सर तो और कॉस्ट ऑफ डेट कैसे करते हैं सर कैलकुलेट? सो कॉस्ट ऑफ डेट के लिए आपको चाहिए पहले RF चाहिए होता है, एंड देन क्रेडिट स्प्रेड। क्रेडिट स्प्रेड आपका हो जाएगा जो आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड पे जो रेट मिल रहा है, मान लो 8% है, ठीक है, एंड गवर्नमेंट आपको 6% दे रही है, तो स्प्रेड हो गया आपका 2% का, राइट। 2% प्लस योर रिस्क फ्री रेट। क्यों RF उसमें हम क्यों ऐड कर रहे हैं? रिस्क फ्री रेट। हाँ, रिस्क फ्री रेट में हम स्प्रेड ऐड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज स्प्रेड हम ऐड इसलिए कर रहे हैं, अगर हम क्योंकि हम अपना पैसा कंपनी को दे रहे हैं, हम बेसिकली हम कैपिटल मार्केट से पैसा उसमें कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो हमें उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, और रिस्क इन्वॉल्व है तो हमें उसके लिए एक वो चाहिए, आई मीन लाइक वी नीड अ प्रीमियम, क्योंकि हम ज़्यादा एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं, तो उसको हम रिस्क को हमें कॉम्पनसेट भी करना होता है। अदरवाइज वी कैन सिंपली इन्वेस्ट इन अ गवर्नमेंट बॉन्ड, तो गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी रहती है कि दे कैन प्रिंट द करेंसी and they can pay you back, but the firms they don't have any like authority to print currency and all that, वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास होती है। so you are taking in a more risk in it to get the higher return, and for that higher return there is a risk involved, because कंपनी कुछ भी हो सकता है ना उसके साथ। so higher the risk, higher the the risk premium। अगर हम रिस्क प्रीमियम लेंगे तो रिटर्न तो मिलेगा ही ना। yes, that is the higher the risk, higher the return, that is the funda। सर lower the risk, lower the return। सर वैक हम लोग कैलकुलेट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हैं कि मार्केट कॉस्ट? सी कॉस्ट ऑफ जनरली देखिए ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस वैल्यूएशन डेट पे कर रहे हैं, राइट। सो अगर मैं बात करूं कि दिस इज बेसिकली इसके अंदर आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी रह रहा होता है, इट इज योर आई मीन मार्केट का उस टाइम पे क्या मतलब पोजीशन चल रहा होता है। अगर आपको बाय बुक्स जाना है देन यू हैव टू टेक द मार्केट वैल्यू, बट कॉस्ट ऑफ डेट का जनरली आपके पास मार्केट वैल्यू रहता नहीं है, ठीक है, बिकॉज वो अगर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि यार जो अगर फॉर एग्जांपल कंपनी ने बॉन्ड इशू करे हुए हैं तो अपने एनुअल रिपोर्ट में बताता है कि उसने किस रेट पे कौन सा बॉन्ड इशू किया हुआ है। सो आप वो आप एज अ कॉस्ट ऑफ डेट एज अ कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। बीटा के लिए आपको हिस्टोरिकल देखना पड़ता है, बिकॉज हम जनरली तीन तरह होता है ना कि अगर बीटा ग्रेटर देन 1 रहेगा तो रिटर्न मतलब मार्केट से ज्यादा रहेगा, वो बीटा देखो हायर देन 1 मतलब ये होता है कि अगर आपका इंडेक्स मान लो 1 जैसे बीटा इज हायर देन 1 का मतलब क्या है कि अगर x कर रहा है तो वो 1x से बढ़ेगा। अगर आपका बीटा इज 0.8 है तो यानी कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपका जो कंपनी का स्टॉक है वो थोड़ा 0.8 से ही बढ़ेगा, 0.8x से बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, राइट। ये होता है। तो हाँ बीटा ज्यादा भी है तो जनरली रिस्कीनेस भी इन्वॉल्व होती है। अब जनरली 1.2 के आसपास बीटा मतलब स्टेबल फर्म्स का ठीक रहता है। ज्यादा बीटा होता है वो आपको ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक्स देखेंगे तो उनका बीटा भी हाई होगा। क्यों? बुल रन में वो बहुत ज्यादा रिटर्न दे देंगे, लेकिन जब मार्केट
डाउन टर्न में जाती है देन उतनी तेजी से वो गिरता भी है, क्योंकि वो हाई वॉलेटिलिटी है उसके अंदर, स्टॉक के अंदर। सर बीटा तो रिस्क को बताता है ना कि मार्केट में क्या रिस्क को शो करता है बीटा आपका कंपनी वो जो मतलब मार्केट रिस्क, वो रिस्क तो है, लेकिन रिस्क आप देखिए ना कि वो ज्यादा रिस्क है ना उसका, कंपनी का तो सिस्टमैटिक रिस्क थोड़ा ज्यादा है ना विस मार्केट। सिस्टमैटिक रिस्क तो सर होल एज ए मार्केट हो गया ना, जैसे कोविड-19 पूरा हैम्पर कर दिया मार्केट को। सी योर बीटा इज सिस्टमैटिक प्लस योर अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक के अंदर आपके मार्केट रिस्क प्लस योर कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, वो दोनों इंक्लूड होते हैं। अब कंपनी में मान लो देयर इज लाइक देयर इज नथिंग गोइंग ऑन इकोनॉमी, सब कुछ ठीक चल रहा है, बट समवेयर डाउन द लाइन फर्म के जो लेबर यूनियंस होती है दे स्टार्टेड गोइंग ऑन स्ट्राइक, उसका मार्केट से लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है, राइट अनसिस्टमैटिक रिस्क। राइट। मार्केट में अगर जैसे आप कभी कभी मैनेजमेंट रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, एंड मैनेजमेंट रिजेक्ट हो गया, उसमें मार्केट का कोई रोल नहीं है, राइट। कोई एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, उसने रिजाइन कर दिया, सो वो अब एक्सपेक्टेशंस क्या आती है जब मार्केट में वो न्यूज आती है कि कंपनी में कुछ गलत हो रहा है या कुछ देयर इज सम फिशी गोइंग ऑन, तो जाके आपका फिर मार्केट में उस पर इम्पैक्ट पड़ जाता है। बट दैट इज ओवरऑल मार्केट का उस स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी फाइन। अगर किसी इंडेक्स का पार्ट है, आप इंडेक्स में देख सकते हैं एवरी दैट पर्टिकुलर इंडेक्स इज डूइंग फाइन, द कंपनीज अंडर इन दैट इंडस्ट्री इज डूइंग फाइन, बट why particular firm is kind of facing some trouble, because of that there is a company specific risk which is not related to the market. So your like your labor unions, your management reject, some person left, so that is सिस्टमैटिक रिस्क तो पूरा मतलब पूरा मार्केट को हैम्पर करता है। जैसे सर कोविड-19 आया तो जितना मार्केट था सब सैक्रिफाइस किए हैं। सी कोविड-19 आया, दैट इज दी वो उसका इम्पैक्ट तो हर फर्म पे पड़ा ना, दैट इज इन वो इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ा है, तो वो हर कंपनी को इम्पैक्ट करेगा। बट वो अब ये आपका रिफ्लेक्ट करेगा आपका जो रिटर्न, अगर आप कभी देखेंगे तो उसमें मतलब आपका रिस्कीनेस भी उसमें बहुत बढ़ जाएगी। आप तभी देखिए, अब जैसे इन्फ्लेशन चल रहा है, अब इन्फ्लेशन चल रहा है, ये अब किसी फर्म्स might be doing very well, some of the firms, but since inflation चल रहा है then they have to increase the prices, right? अब ये भी तो तभी तो यहाँ पे हमने इन्फ्लेशन डेटा क्यों ऐड कर रहे हैं, इन्फ्लेशन डेटा हम क्यों ऐड कर रहे होते हैं। अगर आप थोड़ा हिस्टोरिकली जाके देखेंगे तो इन्फ्लेशन अपवर्ड ट्रेंड में और काफी जगह तो उसने ब्रेक कर दिया है। So this is why we add these inflation delta or these risk premium, because इससे आपका जो पैसा लेने का जो मतलब जो कहते हैं ना कैपेसिटी, वो थोड़ा रिड्यूस हो रहा है, आपको हायर रेट पे पैसा मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे तो अगर आप अभी लोन लेने जाओगे होम लोन, तो आपको महंगा पड़ेगा होम लोन। क्यों पड़ेगा? क्योंकि इन्फ्लेशन भी आ रहा है और इंटरेस्ट रेट हाइक भी हो रहे हैं, तो आपके एफडी पे इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेगा, लेकिन आपका अगर आप होम लोन लेने जाओगे, कार लेने जाओगे, वो सारे आपको महंगा पड़ेंगे। यस सर, थैंक यू सर। श्योर, वेलकम। सो एक क्वेश्चन था, कैन यू डिस्कस द क्रेडिट स्प्रेड इन डिटेल? सो लेट मी टेल यू, लेट मी शो यू कि हम बेसिकली कैसे करते हैं। आपको पहले मैं जो एक्सेल में बता देता हूँ। अभी तक जो मैंने आपको स्प्रेड के बारे में बताया वो तो क्लियर है ना? उसमें अभी कोई डाउट है तो वो बेसिक मैं क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद आपको मैं थोड़ा और डिटेल में बता दूंगा। हेलो, am I audible? Yes sir. Yes. Yeah, so क्वेश्चन किसने पूछा था? आई मीन टू द वाइडर ग्रुप, आर यू क्लियर विद द बेसिक्स ऑफ दी कि भी स्प्रेड का क्या है, बॉन्ड का क्या है, वो बेसिक्स Yes, आपको sir. थोड़ा क्लियर है ना? Yes sir. ठीक है। सो बेसिकली क्रेडिट स्प्रेड का, जैसे मैंने आपको बताया, एक नॉर्मल बात करी जाए कि आपको सरकार का जो बॉन्ड दे रहा है 6%, जैसे मैंने बताया। आप चलिए आप एक एक्सरसाइज कीजिए, आज सेशन के बाद आप इंडिया का जो सरकार का जो बॉन्ड है ना, जो अगर आप सरकार का बॉन्ड लेते हैं, आप उस बॉन्ड का रेट देखिए, गूगल करके आपको शायद हो सकता है फ्रीली मिल भी जाएगा, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। एंड अगर आप किसी भी इंडियन फर्म की कंपनी की एनुअल रिपोर्ट ओपन कीजिए जिसने
डेट लिया हो, एंड आई एम श्योर बहुत से इंडियन फर्म्स हैं जिन्होंने डेट लिया होगा, उनकी एनुअल रिपोर्ट में जाके आप उनका रेट देखना कि वो बॉन्ड पे कितना रेट, मतलब कितना इंटरेस्ट, कितना रेट ऑफ उसका वाइटिम कितना है, और उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो स्प्रेड होगा। स्प्रेड वो इसलिए है क्योंकि अगेन उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। सो सरकार का पैसा फ्री होता है, मतलब सरकार आपको मतलब बेसिकली पैसा अगर वो दे रही है तो उसके पास इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए भी अथॉरिटी है, वो कर सकती है। वो नोट छापेगी, नोट छापेंगे तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ता ही है, वो तो हम सबको पता है। लेकिन उसको अगर आप सरकार ने आपको पैसा देना है तो वो नोट छापेगी, वो नोट छाप सकती है, उसके पास ज्यादा पैसा आएगा। या अगर आप बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट की, तो आरबीआई उसको डिविडेंड पे करता है, तो वो डिविडेंड पे करता है, वो आपका एक वो एक कंपोनेंट होता है जिससे सरकार आपको पे कर रही होती है अपने अगर आरएफ के ऊपर, जो सरकार का जो बॉन्ड है, जो आप, तो ये बेसिकली सरकार का पैसा मुफ्त होता है। और अगर आप किसी कॉर्पोरेट के पास जाएंगे, बाहर से सरकार के अलावा आप पैसे लेंगे, तो वो आपको सर उससे ज्यादा रेट पे देगा, क्योंकि उसमें सिस्टमैटिक रिस्क है, अनसिस्टमैटिक रिस्क है, बहुत चीजें इन्वॉल्व होती है। इकोनॉमी, एक कॉर्पोरेट इकोनॉमी नहीं संभाल सकता, वो कंट्रीब्यूट कर सकता है लेकिन इकोनॉमी को वो संभाल नहीं सकता। दैट इज द मेन थिंग। एंड इसका एक सिंपल सा एक्सरसाइज आप करिएगा, आप जाके आरएफ देखिए, जो भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट का जो बॉन्ड होगा उस पर कितना रेट जा रहा है, और आप किसी इंडियन फर्म का एनुअल रिपोर्ट जाके या थोड़ा गूगल करके भी अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि वो उसने मार्केट कितना डेट लिया और डेट से उसने कितना उसका वो रेट भर रहा है उसके ऊपर। सो दैट इज योर बेसिकली योर स्प्रेड। अगर आप बॉन्ड भी खरीदते हैं, जैसे मान लो अपने टाटा ने अपने बॉन्ड इश्यू करे हैं, राइट, और आप उसके इन्वेस्टर हो बॉन्ड में, हो सकता है आपको 8-9% पे दे रहा हूँ, राइट, लेकिन अगर आप सरकार का बॉन्ड लेने जाओगे तो सरकार का बॉन्ड उस पर आपको कम कम में दे रहा होगा वो। सो ये इनका डिफरेंस होता है क्रेडिट स्प्रेड, जो हम अपनी वैकल जो हम कॉस्ट ऑफ डेट में हम कैलकुलेट करते हैं। So is it clear, or do you need like further clarification? Sorry. So there's one more doubt. Yes, sir. That I understood. There's one more doubt. What if a company is starting just now and they want to calculate their WACC? Now, what will they take in company's beta in consideration? So it's a good question. So if a company is starting now, that means it's a private firm, right? Yes, sir. वो अभी listed होगा नहीं. So what we do, that is why we do company comparables. तो इसलिए कंपनी कंपेरेबल्स आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि सिमिलर इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, जो लिस्टेड फर्म्स हैं हम उसका वैक चेक करते हैं, वो हम उनका बीटास चेक करते हैं, एंड देन वी सी कि भाई जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे पीयर का हम लेते हैं, राइट, दिस इज नथिंग बट योर पीयर्स का, मे बी दिस जिसका वैक बना रहे हो, दिस इज माइट बी अ प्राइवेट फर्म, बट दीज आर योर लिस्टेड फर्म्स, and that is why you have their betas and all that, because beta आपका शेयर प्राइस से रिलेटेड होता है। सो you have a private firm which is started, और उसको फॉर एग्जांपल 1 साल 2 साल या 3 साल हुए हैं, इट इज अ प्राइवेट फर्म, इट इज अ प्राइवेट कंपनी, देन उसका बाद के लिए you have to go to the market, you have to look at the listed peer comparables and not the private comparables, because then only you can compare. Okay, sir. Sure. So any other doubt? So see, guys, if you have any inputs, if you feeling that there is a gap in my knowledge, then please feel free to add, because again, I'm also in the industry, but we actually learn from each everyone. So peer-to-peer learning happens everywhere. So if you feel that you have a different opinion, you have a different perspective, or there's a gap in the knowledge, you please feel free to add your inputs, because it will help me to improve my knowledge and the quality of the session and the deliverable as well. So I mean, good or bad, whatever it is, I mean, I would appreciate if you kind of highlight the bad points or the negative points, so that it's gonna be helping me in further sessions. So whatever you feel like, so you can just unmute yourself, or maybe write in the chat box. If you disagree with some assumptions or some concepts, then please feel free to do that.
Sir, I had a news to discuss, which is not related to WAC, but it's related to EY. Can I do that? Yeah, but I'll not be able to give you the accurate information. I No, believe. not accurate information. Actually, there was a report that EY gets penalty in Germany for new Right. audit reports. That's So, right. like, I think you also work in German sector in EY, so that's why I wanted to know, like, how it will affect. See, जितना मुझे knowledge है, so they had an account which was a very big account. So as usual, you have seen, how audit firms have done audits in the past. You see Enron scandal, you see the Satyam scandal. So it happens with each and every firm. Yes. Then they have to pay the penalty. Then there is some, firing and all and everything. So it does impact, but will it impact GDS or the, like other offices? Probably, I'm not sure. The impact has already been taken into consideration, to be very honest. There have been firing in the practice office, Germany practice office, but even I don't have the much clarity on it. Even I had just read the news, and when I discussed, so I mean, not much of the clarity was given to us, to be very honest. So yeah, it does have impact. They, I mean, actually laid off kind of 100 and more than 100 people, so including partners. So okay, so if there are no further questions, let me go head straight back to the SNB cap IQ, and let me tell you how I arrived those. Next second. Saurabh, within 5 minutes हम wrap up करते हैं, then Sure. students will ask you questions ना कि क्या उनको some queries and all. Definitely. So I'll just take only 5 minutes to showcase Okay. the. So firstly, अगर you have a SNP login or whenever you get the SNP login, so this is how it looks like basically. अगर मैं SNP का कोई idea दे देता हूँ. This is the screen which will be, you'll getting. अब यहाँ पे अगर आपको spread bond के rates देखने हैं, it's simple thing है, go to markets, go to interest rates, and आपको यहाँ पे देख लोगे, यहाँ पे आ रहा है government debt. आपको दिखा देता हूँ, government debt आ रहा है, यहाँ पे आपको major rates आ रहे हैं, interbank rates आ रहे हैं. These are corporate yield curves, right? So यहाँ पे आपको कुछ informations दी जा रही हैं. You can when you're having a SNB cap IQ login, so you can look at it. So let's go to government debt. ठीक है. And then if you look at the Germany 10-year Germany government debt 10 years. So you have France का, you have Portugal, you have other countries का. So आपको मैं दिखाता हूँ. This is a 10-year. I consider 30-year. So 10, 15, 20, 30, whatever you can consider as per the request. Generally terminal value पे हम 30-year consider करते हैं here at my firm. So I'll uncheck this. I'll check 30-year bond rate. See यहाँ पे आपको ग्राफ आ जाएगा. ठीक है. These are, I think, monthly returns. Yes. थोड़ा नीचे आते हैं. 30-year government debt rate. It's 2.28, which is I think that here not 2.28. Yeah, see 2.28. This is the snapshot I shared with you. So यहाँ पे आपको और भी चीजें मिल जाती हैं. If you यहाँ पे आपको percentage change मिल जाएगा. It will load. It will take some time to load. Go to chart builder. So either, for example, you need a 5-year rate, so you can just simply replace 30 with a 5-year, then it will show you the 5 years, right? So this is the chart कि कैसे आ रहा है, and you can easily download it. यहाँ पे I think you can use the series कि आपको monthly चाहिए, कैसा चाहिए. Just a second. Edit series. 30-year. See, these are frequency: daily, weekly, monthly, right? आपको monthly चाहिए, you can just simply click apply and then you'll get the monthly data. यहाँ पे एक Excel का export का option होता है. You will click the export option and then you'll get the file.
जिसमें सारे आपके मंथली रेट्स आएंगे गवर्नमेंट के। See from 30th April 22 to till April 2028, April 8th 23, 2.28. Right. So similarly, we'll do for the corporate spread rate, corporate rate bond. So head to markets, go to corporate yield curve. Select, यहाँ पे आपको you see कि annual compounding ऐसे में annual है. Z spread again, it's a good, good concept to read. I think I selected semi-annually in that, but okay. So now go to, just a second. This is USD now. Wait. Actually, we have all the tools जहाँ पे ना ये calculate के आ जाता है. So this is the research which I did yesterday, to be very honest. So कहाँ था यार? Give me a moment यार. क्या? Go to browse tree. Hero. ठीक है. So this is all the bond rates for different industries. This is 2 year, 3 year. Let me see all corporates 30 year. यहाँ पे देखो financials भी आ रहा है 1 month, 3 months. हम 1 month, 3 months consider नहीं करते. But this is financial 1 year, 2 year, go down, go down, go down. 15 years financials. All it has, sorry, it would have those entities having into BFSI basically, consumer discretionary. So there are multiple sectors rate where you can actually see and have a look कि उनका क्या चल रहा है. So I'll select corporate 30 year for all corporates just to be on a safer side. I think I considered semi-annually by mistake, so मैं इसको दोबारा कर देता हूँ. 2.96. Are we getting 2.96? नहीं ना. All corporates 30. But are you getting कि मतलब ऐसे ही basically ये simply go to here, आपको 30 year का दिख जाएगा. जैसे आपको मैंने वहाँ पे दिखाया था ना government debt rate. Similarly, it's the same thing basically. को करते हैं semi annually. सौरभ, स्टूडेंट्स अब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? Yeah, sure, definitely. स्टूडेंट्स काइंडली अपने क्वेश्चंस आप जो भी पूछिए, आपको जो भी डाउट है रिलेटेड टू दिस सेशन ओनली, कुछ और अलग से मत पूछिएगा, रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली. Kindly put it in the chat box because we have 10 minutes left. So we have to wrap up the session at 2:30. So if anyone has any questions, kindly write down in the chat box. So when you will join the firm, you will face similar issues with the S&P Cap IQ. So Yes, sir. don't be surprised. Will you please share this sheet? Saurabh, this is the question. Will you please share this sheet? Yeah, I'll definitely share the template with you. So I'll modify it a bit. थोड़ा सा I'll clean it, so that you can read it properly.
and understand it properly. So thoda abhi congested sa hai, but I'll take care Students, of I'll share it hygiene with you in the factors. group, na? I'll share it with you. Maybe Sunday or Monday you will get your shit in your inbox. Oh, okay, sure. Thank you. Others? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? So many people are here. ये तो क्लियर हो गया ना? संस्कार, आपका क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना? Yes, sir. Yes. Sure. So voice is breaking. So am I audible properly now? Yes, 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 you're audible. Okay. So Ramu, anything which you missed, I can reiterate now. So let me know if you have missed something. Students, kindly write down in the chat box if you missed something, if you have any doubt. No, sir. In the middle, I couldn't able to hear you properly due to network issues. I will Okay. I will able to share read the recording with you. once. I'll share the recording. Yeah, and one more thing, ma'am. Last week recording, it's not able. I'm not able to open that, so it's showing some error. Okay. Yeah, can you Put it please in share the that one? group now. Put it in the group that you are not able to. आप group पे Yeah, डालो. sure. Yeah, sure, definitely. Okay. So student, how do you like this session? Hi, Saurabh sir. I have no question that the cost of the debt, what I have read, the cost of that is interest rate bracket open one minus tax bracket close. So here you just told about the cost of that is tax rate pre-taxes into bracket one minus two. So what is the difference in between these two, and what is the related of the cost of that? So if I understand your question correctly, you are asking the difference between cost of debt pre-tax and cost of debt after tax, right? Yeah. So why we adjust tax rate? Can somebody tell me? Can you tell me like why we adjust tax rate? Because See, even if you have Wacom, जो भी Wacom जो करते हैं, देखिए मैंने यहाँ formula लिखा हुआ है, right? There is a gap. I have left some space. Why is it? Can somebody tell me ये जो WAC का है ये correct formula है या नहीं है? Can someone tell me? Don't look at this figure, just look at this formula. Or specifically cost of debt. yeah. So no one. Okay, I'll tell you. See, basically क्या होता है when a company they raise a debt, right? They get a tax shield on it. So you have an interest component in your P&L, right? When you prepare a P&L, you have an interest component in it, right? So what is that interest? Hello? Expense. Yeah, and an expense, obviously that is an expense, but what that is interest, similar interest expense, as in like kiska interest expense hai wo? Obviously, because we have taken the debt. So Right. So, and why do we subtract that? Because see, when the company has taken debt, they get a tax shield, and for to get the cost of debt, we have to adjust for the taxation as well, because they get the tax benefit on that. yeah. Similarly, I mean, if you kind of take a home loan, right? You get the home loan ka deduction, right, in your when you file your returns, because you are paying making payments higher than अगर आपको 50 लाख का होम लोन है, अगर आप उस पे इंटरेस्ट रेट आपका आ गया मतलब 8% आ गया, 8-8.5% आ गया, sometimes you are actually paying double the principal amount. So उसमें आपको relaxation मिलता है. So that is the same thing with the firm. And tax component is again, if you look at this is the main point when it comes to DTA and DTL, deferred tax assets and deferred tax liabilities. Depreciation एक concept होता है.
because so there's a difference in depreciation का method when it comes to accounting and when it comes to reporting for tax purposes. आप अपने एनुअल रिपोर्ट में देखेंगे फिक्स्ड एसेट शेड्यूल होगा इंडियन फर्म्स के अंदर, एंड इवन यू लुक एट दी अदर फर्म्स एज वेल, वहाँ पे फिक्स्ड एसेट शेड्यूल होगा, राइट? खैर that is a different issue, but the main point is कि when the firm raise debt they get the tax benefit, so that's why to adjust that tax benefit we also adjust into the cost of debt. तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, इट इज प्री कॉस्ट ऑफ प्री टैक्स इज नथिंग बट योर आरएफ प्लस योर क्रेडिट स्प्रेड, एंड इसमें मैंने खाली टैक्स रेट का एडजस्टमेंट करा है, दैट इज नथिंग. चाहो तो अब ये हटा भी सकते हो एंड डायरेक्टली यू कैन हैव दिस फॉर्म दिस लाइन आइटम. इट्स नथिंग योर, मान लो सम ऑफ दिस इनटू टू 1 minus your tax rate 2.55 is the same. So there is nothing much difference in between this. I mean, like only the tax rate का जो हम adjust करते हैं, that is the only difference. It is a representation, nothing else. For the simplicity, I have represented in this format. You can present it directly over here. You can eliminate this cost of debt pre-tax. ठीक है, and यहाँ पे कर दो, वो same रहेगा बैकअप का. Got it, sir. Got it. Right. तो आई थिंक सौरभ आज के सेशन का ऑलमोस्ट सब क्लियर हो गया है कंटेक्ट. And just my one question to the group, did you get a chance to look at those links which I've shared? मैंने RF का एक link share किया था आप लोगों के साथ, and I shared the that दामोदरन का link as well with you. So anybody saw those links? I mean, did some R&D? कुछ उसमें आपको डाउट है तो पूछ सकते हो. स्टूडेंट्स, सर कुछ पूछ रहे हैं आपसे. देखिए वैक की थोड़ा को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट इट इज वेरी सिंपल. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दी पैरामीटर्स. कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला को पता है, यू हैव दिस पैरामीटर्स, इनको नोट डाउन कर लो एक जगह. कॉस्ट ऑफ डेट का पैरामीटर्स पता है, नोट डाउन कर लो एक जगह, एंड देन लुक एट द सोर्सेस. दैट इज डन, योर कैलकुलेशन इज डन. There are some intricacies involved with respect to betas and debt to equity. वो you will get to know once you will start in industry. We take peers का. I mean there are some things which I cannot explain in detail. जितना में से हो सकता था simplify करके मैंने आपको इस तरीके से आपको बता दिया. But overall just remember the these parameters and how you arrive at the WACC. So any further doubts, guys? No doubt, sir. No doubt. So all clear? No doubt, sir. All clear. मतलब all clear या all clear? मतलब कौन सा वाला clear? सब प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए आप सबको समझ आ गया, एंड जो भी सर ने समझाया है काइंडली पुट इट इन द चैट बॉक्स. ग्रेट. So guys, if you have any feedback, please share it with me here and now. Yes, sir, मैं आपके साथ शेयर करूंगी by today evening only the feedback related to this session. So I think it's time to wind up the session. So thank you so much Saurabh sir for this wonderful session जो आपने last week भी किया and continue अभी हमने इस week भी किया है. So I think ये सेशन काफी नॉलेजेबल था स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज हमने अभी इस तरीके का सेशन अभी तक नहीं हुआ था. दिस इज द फर्स्ट टाइम we have this kind of session. So thank you so much. Sure, you're most welcome. Yes, and students, thank you so much for all participation and patiently आप लोगों ने सब सुना, सब समझ आया आपको. I think everyone सबको ये सेशन काफी लगा होगा कि हाँ हमने कुछ गेन किया है, कुछ चीजें जैसे इट्स लाइक अ प्रॉपर क्लास उनको मिला है पूरा 1 घंटे का, मुझे लगता है. Yeah, I mean, see, my idea was to showcase them ki how you do it at the higher level, because the simple way you can go Google pe jao and there are multiple websites. You can just download the template and then you can just plug in the whatever. Like they are not going to detail ki how and मतलब वो कहाँ से आया, from where they have sourced those data.
So I'll conduct similar session if possible for the trading comms and transaction comms as well. This is we Sure. have done from the CIQ. Right. But I'll tell you how to shortlist these peers. Then it would be not much of a like lengthy session. 2 session तो नहीं एक ही session में हो जाएगा. But this is how generally we done at the industry level. Okay. We don't depend too much on Googles and all that. So we have everything in place, in our system. So it makes our life easy. But वो आपको उसकी back story पता होनी चाहिए. Okay. Great. Sir, I have a question that when we'll go to the industry, so will we have the training into deep regarding this? Yes, you will have the training. So whether you are a fresher or you are an experienced, so you will be trained, but not hand 101 training to nahi hoga. It will be like just एक batch hiring hota hai, right? There are 50-60 people they have hired across the segments, across the service lines. So आप में मान लो 10 लोग hire हुए हैं, 15 लोग hire हुए हैं. तो उन 15 का एक collective training sessions planned होता है for like 10 sessions होता है, and but वो general session होता है depending which geography you are catering to. For example, this is मैं जर्मनी का हूँ तो जर्मनी में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है काम. जो यूएस में है that is more simplistic, but it is also like good work. So depending on your geography to geography वो थोड़ा different हो जाएगा. But हाँ, you will be trained, you will be made aware of about the tools the company uses, कैसे use करना है. And when you join your respective teams, when you start doing your work, you will have your peers. They'll initially they'll be helping you out for 6 months, for 7 months. So don't worry that you just have to keep you just have to nail the interview. You just have to let them know that I know these things. So if you hire me, probably you will be spending your less energy in training me than somebody else who just who has just a theoretical knowledge and just read the books or watch the like videos and websites and all that. So that will be then you will be guys having an edge if you tell them कि I know कि ये spread कहाँ से आता है, calculate क्या होता है, 30-year bond भी लेते हैं, 15-year भी लेते हैं, और inflation हमें cost of equity में add करना होता है, and that is क्यों add करते हैं, why we add premiums in cost of debt and cost of equity, why do we do that? So if you will tell the interviewer, वो आपसे cross question नहीं करेगा. He or she would know कि that this guy knows. Otherwise there will be a cross question. You आपने बोल दिया कि ये cost of equity का formula है, then they will ask you how you arrived of these, from where you will source these inflation data, RF. Then what you will do? Because formula सबको पता होगा, but from where you are sourcing, obviously you have to be answerable to that. But just don't tell them कि भाई किसी EY के बंदे ने हमको समझाया था, ये करा था, वो करा था. Then there will be a confidentiality issue. But again, just kind of frame it in your own story, frame it in your own words. That Charlie, okay. I think it's time to wind up the session. Thank you so much, sir, again, and thank you so much, students. Sure. Thank you so much, everybody, and thank you for having me here again. Thank you for being a patient audience. So look forward to such interactive sessions in the future as well. Saurabh, sir, you are the host, so you can close the meeting. Oh, okay, sure. Okay, so thank you everyone. Have a nice weekend. Bye. Same to you. Thank you. Thanks for watching. Do like, share and subscribe to our YouTube channel. And don't forget to click the bell icon. #Skill से करियर तक हम आपके साथ हैं.